Good evening, sir. Can you tell me how far I have completed yesterday? Do you have any idea? No, na? So today we were about to start organizing. Thank you, Madhusmita. Welcome, Thank you. sir. Means you are listening very carefully. Today we're going to start organizing. Okay. So in my previous class, whatever I have taught you, do you have any doubt? Any questions that you need to ask? On any topics that you need to discuss once again? No, na? No, sir. Okay. Very good. Today we're going to start the next one. That is next topic is organizing. What is organizing? First of all, I have told you what is management, what are the features of management, what are the natures of management. Now today I will going to start a new topic that is organizing. What is organizing? So look at the definition, how beautifully it has been translated here. Organizing is an important activity by which management brings together the human and material resources for the achievement of the predetermined objectives. So simple, to the point. Organizing Sir, your voice is not clear. or material. Okay, it's because of network issue, Madhusmita. It's because of network issue. Now it is clear. Hello. Sometimes it is audible, sometimes it's not audible. Hello. Now it is clear. Yes, sir. Hello. Yes, Okay. sir, it's clear. Now, thank you. Now, so what is organizing? Organizing is an important activity by which management brings together the human and material resources for the achievement of predetermined objectives. This is the simple definition of an organizing. इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहां पर मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेस को और मटेरियल रिसोर्सेस, चाहे वो पैसा हो, मशीनरीज हो, चाहे कोई भी हो, मटेरियल रिसोर्सेस को एक एक कोऑर्डिनेशंस में एक जगह पर वो असेंबल करते हैं फॉर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका मोटो है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए ये दोनों रिक्वायरमेंट्स वेरी एसेंशियल होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल रिसोर्सेस. And this activity which brings these two resources together is called organizing. ये दोनों का जो एक साथ मतलब इस जोड़ को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है. ठीक है. Now, the relationships, now look at the next. Organization helps in establishing relationships among the members of the enterprises. The relationships are created in terms of authority and responsibility. The relationship are created in and responsibility. Each members in organization is assigned a specific responsibility or duty to perform and is granted the corresponding authority to perform his duty. So, in any organizations, to make any organization successful, the relationship between the management and between the organizations, these two combinations, these relationships or this combination of these two is very, very important to make successful to any organization. Suppose अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल हो, उसका अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, उसका अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करता है, तो वो कोई भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या चाहे कोई भी कंपनीज हो, वो ज्यादा दिन मार्केट में स्टे नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर होता है. इस और सपोज फॉर एन एग्जांपल, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिसिप्लिन ना हो, सबसे बड़ा लूपहॉल है. जहां पर रिसोर्सेस ना हो तो आगे नहीं बढ़ेगा. जहां पर प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किया जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो लूफॉल कर जाता है, फॉल हो जाता है. या फिर जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कंपनीज या वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है. तो देखो,
हर एक जो पैरेलल जो मतलब पकड़ है, हर एक जो पैरेलल जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर सही तरह से काम नहीं करता है, वो चेन जो है, वो चेन अगर सही तरह से काम नहीं करता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो टिकता नहीं है। ओके, इट्स जस्ट ब्रेक डाउन द शैकल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मतलब एग्जांपल्स दिया जाता है। आई डोंट नो वेदर योर टीचर्स और यू whenever you are in college days or whenever you are going for your classes and all, whether this example has been given to you or not, I don't know, but this is one of the best example about management. The management students or management faculties they used to give, that is the example of Nokia. You know what's Nokia? नोकिया पहले फोन तैयार कर, नोकिया यूज टू क्रिएट फोन, उसके बाद तो बैटरी वगैरह सब कुछ तैयार करते थे, तो सबसे पहले नोकिया फोन तैयार करते थे। देखो, नोकिया जब बाजार में नए फोन लेके आए थे, जब नोकिया ने नया फोन बाजार में लेके आए थे, तब उसका कितना क्रेज था। ठीक है, इतना क्रेज था। उसके पास, नोकिया के पास रिसोर्सेज अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था, प्रिंसिपल्स अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था, ऑथोरिटीज अच्छा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा था, सारे चेन्स एक साथ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से नोकिया अपग्रेड हो रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहां पर नोकिया का बाजार इतना बुरी तरह से मार्केट में गिर गया कि आज नोकिया का नाम या नोकिया का फोन आज मिलना मुश्किल हो गया। नोकिया इतना बड़ा ब्रांड था, नोकिया यूज टू बी अ बिग ब्रांड इन द मार्केट, उससे बड़ा ब्रांड कोई था ही नहीं, नोकिया ब्रांड, अ बिग ब्रांड। ओके, ईस्टर्न रीजन में या सदर्न रीजन में नोकिया का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया। जानते हो रीजन क्या था? रीजन था ये जो मैंने तुमको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब में एक चीज बहुत अनकॉमन था। क्या? नॉलेज। द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब बाजार में नोकिया को फॉलो करते करते एप्पल, वीवो, शाओमी, उसके बाद और भी जितने सारे, मोटोरोला, जब उसके बाद नोकिया को टक्कर देने के लिए मोटोरोला फोन आए थे। जब मोटोरोला फोन यहाँ पर आए थे, मोटोरोला ने अपना हैंडसेट को बहुत अपग्रेड किया था। आपको मालूम होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मोटोरोला ने सबसे पहले फोल्डिंग फोन निकाला था। पहले जो फोन्स था, आप स्मार्टफोन का थोड़ा सा अपग्रेडेशन वाला वर्जन देखोगे तो वो फोल्डिंग मोबाइल आता था, यू नो दैट, वो मोटोरोला था। मोटोरोला ने अपना डिजाइनिंग्स को बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो दिया, एंड इट चेंजेस द डिजाइनिंग। नोकिया वहीं पर रह गया। धीरे धीरे मोटोरोला को टक्कर देने के लिए फिर दूसरे दूसरे कंपनीज आए, वीवो, उसके बाद और भी जो कंपनीज आए, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, लेकिन नोकिया वहीं पर कहा वहीं रह गया, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। उनका मैनेजमेंट ये विश्वास करता था कि आवर कस्टमर्स our customers and our products are so rich, any mobile companies that coming to the market will never ever going to replace our company। ये उनका एक, क्या बोलता, स्ट्रॉन्ग एक परसेप्शन था उनके जहन में। यही परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन के कारण नोकिया ने अपना कंपनी डुबा दिया। समय रहे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया ही नहीं है। ठीक है, उनका मैनेजमेंट उतना अच्छा था ही नहीं, नॉलेज था ही नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं। और जब एक चेन, एक धागे में एक जो एक अगर उसका कड़ी टूट जाता है, तो वो पूरा धागा फिर खोलने लग जाता है, छूटने लग जाता है। और नोकिया कंपनीज के साथ ये सबसे बड़ा दुर्घटना हो गया था। तो क्या इतना बड़ा उसका मतलब लॉस हो गया, हेवी लॉस, आप सोच नहीं सकते हो। यू नो, where the Nokia's phone, when it was first came into the market, they used to sell the Nokia phone more than 10,000, 12,000, 15,000 plus. And when they were been put down, when they were been thrown into the market, they was just thrown out of the market, they used to reduce the price of the mobile phone just for 500, 600 rupees. Unfortunately, nobody trying to purchase the Nokia mobile because
The software is outdated. The decorations, the outer look of the Nokia phone is outdated. Means the versions is outdated. The features are outdated. Nothing is important there. So gradually what the other mobiles company used to do, the mobile companies used to upgrade their software, they used to upgrade their designings, they upgrade their visibility, they upgrade their camera system each and every day. 9.8% megapixel नोकिया वहां पर था ही नहीं, और जिसकी वजह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन टूट गया। तो देखो जो भी, और ये एग्जांपल्स बहुत दिया जाता है मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को, कि जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, ये चीज आपको बहुत जरूरत पड़ता है। दीज आर द थिंग्स जहां पर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैन पावर, उसके बाद मैनेजमेंट स्किल, ये सब बहुत जरूरत है। अगर ये जो चेन है जो मैंने आपको बताया, ये चेन्स अगर सही से घूमेंगे तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। एम आई क्लियर? इज इट क्लियर विद द डेफिनेशन? मधुस्मिता, इज इट क्लियर? Yes, sir. Any doubt? Okay. The next one is directing. Organization समझ में आ गया। Now next topic is directing. What is directing is all about? तो आपको लगता है कि ये तीनों जो है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट, ये तीनों एक है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर है। That I am going to tell you. The term directing or direction is usually used in everyone's life. It has got a wide interpretation in these days. It is no more restricted to commanding a view as any company. In other words, directing involves determining the course, giving order and instructions, and providing dynamic leadership. What is directing? Directing involves determining the course, giving orders, instructions, providing dynamic leadership qualities is directing all about. Okay. Suppose for an example, if you were working in any company, if your respective boss or if your respective HR is not directing you in a proper way, not guiding in you in a proper way, then you will be in a different track. Okay, the production for you and for your HR, the productions or the development of the organization may going to get hampered. That is why direct directing not only means just to give the direction, just to give order. No, direction involve. Look at the word that a writer has chosen. Involve. Directing involve simply not giving orders, but the interaction, instructions, providing dynamic leadership. This is called the direction. It relates to those activities which deal directly with influencing, guiding, supervising, and motivating subordinates in their job. ओके, सो डायरेक्शंस का काम क्या होता है? डायरेक्शंस का मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंस दिखा के काम करना ही नहीं होता है कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूं, यू नीड टू लिसन टू मी, यू नीड टू लिसन टू योर बॉस। नो, इट ओनली हैपेंस समटाइम्स। ओके, ज्यादा आप अपना इन्फ्लुएंस दिखा के, ज्यादा अपना रौब दिखा के आप ज्यादा दिन वो काम नहीं कर सकते हो। और एनी समडे समवन विल गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट, प्रोटेस्ट यू। दैट इज वाई डायरेक्शंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं होता है। डायरेक्शंस का मतलब होता है प्रॉपर वे में चैनलाइज करना, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, और सुपरवाइजिंग करना, और कभी कभी यू नीड टू मोटिवेट योर सबऑर्डिनेट्स। ओके, will be your subordinate will to create, and they will give you 100% whatever the jobs you have assigned to them. This is called direction. Okay, now does directing involve, अच्छा ये अब इसके डेफिनेशन तो ये हो गया। नेक्स्ट कम
द व्हाट आर द सब फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये क्वेश्चंस बहुत आता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का फंक्शंस क्या होता है? देखो, नंबर वन होता है कम्युनिकेशन। डायरेक्शंस का नंबर वन फंक्शन होता है प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन टू योर सबॉर्डिनेट्स। if you unable to if you're unable to communicate to your subordinates properly, okay, in a good, not guiding them in a proper way, then your communications or your directions will be fail. That is why in direction sorry, in functions of directions or the features of direction, communication is one of the most important tool. क्या है उसमें? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहां पर कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया है, ठीक है। यहां पर कम्युनिकेशन कैसे करना है ये नहीं बताया है, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखिए छोड़ दिया है। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, अ मैनेजर ऑफ एनी कंपनी हैज ऑलवेज टू टेल द सबऑर्डिनेट्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये तीनों जो सवाल है ना, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, इसमें बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। कौन सा काम किस वक्त करना है, कैसे करना है, कहां करना है, कैसे खत्म करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के। और इसका सबसे अच्छा जो काम करवा सकता है, जिसका कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा है, जिसका कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है, बेटर है। ओके, एम आई क्लियर टू यू? इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर, if the communication is not clear, if the if your suppose your HR boss, the boss of your, suppose any faculty, chalo boss chhod do, suppose any faculty, he doesn't know what to teach, how to teach, when to teach, what type of topics I need to teach, after what I'll going to teach. If he is not clear and concise about the topic, he is not clear about the topic, then how he or she will going to guide the students? The students will be in a different, the students will be guided to the different way. The concept will not going to get clear. If the concept is not going to get clear, then how the students will going to appear for the examinations if the concept is not clear? That is why communication is very important, because if you communicate properly, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से जानने के लिए, देखो मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूं, आपका क्लास ले रहा हूं, क्या क्लास ले रहा हूं? एमबीए पेपर ले रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर का। क्या पेपर पढ़ा रहा हूं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या पढ़ा रहा हूं? ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक में क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आपके यहाँ, बिफोर कमिंग एंड ज्वाइनिंग टू योर क्लास, आई नीड टू लुक आफ्टर what I need to teach you, how much I need to give teach you, and what are the topics today I am going to teach you. I need to keep these things clear, very clear in my mind. Then only I can teach you. Okay, this is the best. Suppose this is a simple example that I'm going to give you. In the same way, or in the same manner, suppose if any HR or if any owner of the company doesn't know how to get the works done by the subordinators, what type of work should done by the subordinators, when to the works should be done, if he doesn't know, then how he or she will going to manage or going to run any organization? That is why communication is very very important. Okay, the next one is leadership qualities. The next features of direction is leadership qualities. Now, what is the meaning of leadership qualities? A manager must perform the function of leadership if he is to guide the people effectively for the achievement of organizational objective. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव बॉस है, उसका लीडरशिप क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग। ओके, अच्छा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए।
For example, now, Madhusmita, you have already completed your post graduations from in botany. Now you have chosen MBA. Why? There is some reason is there. There is some reason is there. You want to start, may you going to start your self business, or may you want to go to become an HR of any company, or you want to acquire some higher post in some any companies. Maybe these are some objectives that you have in your mind. Okay, so what does it means? Your goal is clear. Your goal is clear. Okay, now suppose if you just complete your master degree in post graduations in geology honors. Now if you doesn't want to go to this directions, MBA directions, then what will you do? You need to complete your net get quali you need to complete your net. Okay, if you want to be a college faculty, if you want to be an assistant professor, if you want this line, then you need to be specific in your goal. What you need to do after completing your post graduation? You need to prepare for your net qualification. After completing your net qualification, you need to sit for the PhD. You need to do your PhD. After completing of your PhD, may you will going to get the job of of any college as an assistant professor or an associate professor. Very simple. लेकिन आप अपना गोल्स ऑब्जेक्टिव को चेंज किया है. आपने ये पढ़ाई के साथ साथ एमबीए चूजन किया है. व्हाई? बिकॉज टू गेट सक्सेस इन माय लाइफ मोर एंड मोर. आज एमबीए का एमबीए, एमसीए, बीबीए, सीएससी, ये जो कोर्सेस है, ये इतना आपका मतलब अभी इतना इसका हाइप है, यू अनइमेजिनेबल. यू कैनॉट इमेजिन. एमबीए का एचआर पेपर, एमबीए का एचआर, सेल्स, ये दो जो है सब्जेक्ट्स, इसका ऊपर अभी बहुत डिमांड है. और कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बहुत डिमांड है. Okay, so that is why you need to have your goal, and to have achieve your goal you need to have a leadership qualities. लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब ये नहीं कि दूसरे के ऊपर आप लीडरशिप क्वालिटीज आप झाड़ो. नहीं, अपने आप को भी गाइडेड करो एक लीडर की तरह. नो, आई नीड टू चूज दिस ट्रैक, आई विल बी चूजिंग दिस ट्रैक, आई नीड टू गो ऑन, आई नीड टू वर्क ऑन दिस ट्रैक. So these are the some effective leadership qualities anybody should have in them. Then only an organization can be come out successful. Next है motivation. तो पहला हो गया आपका communication, leadership. The third one is motivation. What is the meaning of motivation? देखो, a manager can get the desired result from the people working in the organization through proper stimulation or motivation. What is the proper stimulations mean? Stimulation, I think Madhusmita, you know, is a biological term. Stimulations means quick response. Stimulations, quick response. Okay. So what is motivation? Motivations means when a manager get desired result from the people, मनचाही रिजल्ट मिल जाता है उनके लेबर से, उनका सबॉर्डिनेट से, वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रॉपर स्टिमुलेशंस और मोटिवेशन. थ्रू प्रॉपर स्टिमुलेशन एंड मोटिवेशन के माध्यम से आप कोई भी इंसान को, आपके कोई भी वर्कर्स को आप अपना काम करवा सकते हो. जरूरी नहीं है, आप अपने खुद को भी अच्छे से मोटिवेट करके आप बहुत बड़े अच्छे पोजीशंस पे जा सकते हो. दैट इज व्हाई in your life motivation is very very important. Okay, the manager should study the behavior of individual working under him to provide them proper inducement to some financial incentives are important, while others are motivated by no precary incentive like job security, job enlargement, freedom to work, recognitions by peers management. जब तक आप अपने वर्कर्स को थोड़ा सा फ्रीडम नहीं दोगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा फ्रीडम नहीं दोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, आप उतना अच्छा काम उनसे निकलवा नहीं सकते हो. सपोज today you want
20% प्रोडक्शन, आप अपना कंपनी में 20% प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट करना चाहते हो, द फैक्ट बता रहा हूं, तो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मोटिवेट योर वर्कर्स कि आप अगर 20% इंक्रीमेंट इंक्रीज अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो आपका भी प्रमोशंस होगा, आपका भी सैलरी हाइक होगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा पैसा ज्यादा आएगा, पैसा अगर ज्यादा हुआ तो फ्लो ऑफ मनी ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ मनी ज्यादा होगा तो आपके पास भी पैसा उतना ही आएगा। इसे कहते हैं मोटिवेशंस। और इस मोटिवेशन के माध्यम से आप अपना जो 20% टारगेट है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, वो फिर आप कर सकते हो। मोटिवेशन इतना बड़ा एक पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम आई क्लियर? एनी डाउट? No, sir. ओके, the process now, the next one is, what are the process to control the involvement of the following steps? नहीं, ये तो सेम चीज रिपीट किया गया है। now what is the significance of management, ये 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, what is the importance of management, और the questions will going to come, what is the significance of management, क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, significance और importance of management। देखो क्या लिखा है, देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट टू मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एज पीटर ड्राकर। यू नो पीटर एफ ड्राकर, आपने नाम सुना है पीटर ड्राकर का? मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है उन्हें, पीटर एफ ड्राकर, ही इज वन ऑफ द मैनेजमेंट गुरु। उनका आज भी उनका थीसिस, उनका एग्जाम्पल्स, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को आज भी कंपनीज में फॉलो किया जाता है, मिस्टर पीटर ड्राकर, सर पीटर ड्राकर। Am I clear? He is one of the most, what you can say, business giant. उन्होंने अपना स्टार्ट जो किया था, मैंने जहां जितना मैंने उनके बारे में थोड़ा सा जाना, उन्होंने एक छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जानते हो कैसे? एक कोको कोला का बोटल्स का ओपनर, एक कोको कोला बोतल का ओपनर, ही यूज्ड टू वर्क एज एन कोको कोला बोतल ओपनर। ओके, उसके बाद उसने देखा अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाया, देखो पीटर ड्रॉकर ने। तो बहुत जन क्या करते थे ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर्स में, दे यूज टू हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, व्हेनेवर दे यूज टू गेट, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे पार्टीज होते हैं, नाइट क्लब्स होते हैं, ओके, दैट पीटर ड्रॉकर यूज टू go there, they used he she used he used to work there, and what is the job? The job is that just to use a bottle opener, इतना वो लोग सब सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक्स करते करते थे कि जो उनके पास मतलब जो बारटेंडर था उनके पास उतना समय नहीं होता कि कोई भी एक बॉटल ओपन करके ड्रिंक्स दे, वो सिर्फ पूरा बॉटल निकाल के दे देते थे। तो पीटर ड्राकर एक दिन ये चीज फॉलो किया और उसने कहा गोइंग टू चार्ज 1 penny फॉर 1 bottle टू बी ओपन फॉर एनी सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक। उसने बाहर एक सेटअप तैयार किया। क्या बाहर सेटअप तैयार किया? उसने बाहर एक ओपनर रखा और सबसे रिक्वेस्ट किया जिसको भी अपना बॉटल ओपन करवाना है, यहाँ 1 penny पेड कीजिए और अपना बॉटल ओपन कीजिए। धीरे धीरे ये बिजनेस इतना सुंदर चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसने कुछ फूड आइटम्स से सेट किया, फूड आइटम। उसके बाद अब कुछ बर्गर्स वगैरह, हॉट डॉग्स एंड ऑल वो सेल करने लगा, वो भी हिट हो गया। उसके बाद उसने गौर किया एक और चीज, द वेस्टर्न पीपल्स आर वेरी मच ड्रग एडिक्टेड, ओके, ड्रग्स इन द सेंस व्हाट यू कैन से, ड्रग इन द सेंस मत हेरोइन चरस गांजा ये नहीं, they are very much alcoholic, or they used to have they are the chain smoker. So what the Peter Drucker used to do, the Peter Drucker slowly increase his setup. He used to now kept the cigarette packets there. He used to offer cigarettes with a cost of 5 penny. इस तरह से धीरे 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 करके उन्होंने बहुत बड़ा ह्यूज सेटअप स्टार्ट किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उसका जैसे बिजनेस टाइकून, उसके बाद बिजनेस जायंट कोई बना ही नहीं। आज भी टुडे आल्सो ही इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऑफ ऑल टाइम। और आज भी उनका एग्जाम्पल्स, उसका प्रिंसिपल्स, उसका फीचर्स, उनका लिखा हुआ बुक्स आज भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना हो, यू जस्ट नीड टू गो एंड लुक
and look at the theories of Peter Drucker, what is written over there. आपको आंसर क्विकली एंड प्रॉम्प्टली मिल जाएंगे. Am I clear? So management is the dynamic life giving element of production. So what is management? Management is a life giving element of production. Any organizations may have raw material, machines, human resources, and other factors, but these can't produce a productions unless there are efficiency of managers. Managers act as a catalyst to make productive use of various resources for accomplishment of organizational objectives. देखो पीटर ड्रकर यहाँ बता रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास लेबर्स है, आपके पास प्रोडक्शन है, आपके पास रिसोर्सेस है, लेकिन आपके पास अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो यू कैनॉट बी गेट्स 100% सक्सेस, यू विल नॉट गोइंग टू गेट 100% सक्सेस. So what you need to do is to run the business, to run any organization, the management is must be strong. Okay, that is why here, according to Peter Drucker, if the resources are not being utilized in a proper way, then a management will never ever will going to get success. Okay, or the organization will never ever going to get success. That is why to run this resources, to run the subordinates properly, they used to have a skilled managers, okay, who motivate them, the subordinates, who make the good decisions quickly, promptly, who can channelize the labors, their hard works in a very proper channel way, so that the increase of their productions will be more and more. That is why here, according to Peter Darker, before going to get a good management, you need to be a very good manager and know how to use your own resources properly. Hello. Hello. The next one is the managerial skills. The next one is the managerial skill. What is the managerial skill is all about? Okay. So the term manager conveys different meanings of different people, and there are no prescribed duties and qualifications of a manager. Okay. In a big enterprise, just a minute, wait. यार कहाँ चला गया? Yes, एक मिनट, wait. Yes, the term what is managerial skill? Okay, next topic is what is managerial skill. The term manager convey different meanings to different people, as there are no prescribed duties and qualifications of a manager. In a big enterprises, okay, there are different distinct distinct classes of employees. Number one is operative employees. Number two is personal employed to supervise other employees. Okay. And number third is the personal of secondary categories in term of managers. These are the three important, or you can say these are the two distinct classes of employees. Okay. Now यहाँ पर बता रहा है according to this book, employees कितने प्रकार के होते हैं, how many types of employees are there. This is very one important part. Number one is operative employee. Employee दो तरह का होता है. According to this book, employees are of two kind. Number one is operative employee, and number two is personal employed to supervise the other employees. Personal employees to supervise the other employees. एक तरह से एक वर्ड में सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं.
which is called supervisor. So basically there are two types of employees, operative and supervisor. Okay, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसका मतलब है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर देयर। अब धीरे धीरे मैं मैनेजमेंट्स के और इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। व्हाट आर द टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर देयर? बेसिकली देयर आर basically there are four level of management are there. Number one is top level management, upper middle level management, middle level management, lower level or first line management. These are the important four level of management: top level, upper middle level, उसके बाद सुपरवाइजरी और लोअर लेवल। ठीक है, ये चार तरह का मैनेजमेंट्स होता है। Now, what is the work of a top level management? What is the work? Basically, what type of work the top level management used to do? Top level management of any company consisting of board of directors and chief executive or managing directors. You must know these questions may going to come in a short notes. Okay, these questions are going to come in a short note type. What are the four levels of managements? Briefly elucidate. ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा देयर आर फोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ब्रीफली। ओके, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनीज कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड ऑफ और मैनेजिंग डायरेक्टर्स। इसका क्या जॉब रोल है? इट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड टू इस्टेब्लिश गोल पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइजेस। इसका जो अल्टीमेट एम है, इसका जो अल्टीमेट काम करने का तरीका है वो क्या है? इट्स जस्ट टू इस्टेब्लिश द गोल, गोल सेट करना होता है, एंड पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाना होता है फॉर, और उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो उस दूसरे वाले पे छोड़ देते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का ये काम होता है। नेक्स्ट कम मिडिल लेवल मैनेजमेंट और अपर लेवल मैनेजमेंट। नाउ मिडिल लेवल मैनेजमेंट generally consisting of head of functions of department. Okay, middle level management क्या होते हैं? Middle level management generally consisting of heads of function departments, heads of functional departments. They are responsible to the top management for the efficient functioning of their departments. They devote more time to the organization and functions of the management. The middle level management include branch manager, superintendent, head of various sections. इनका काम क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी गोल, जो भी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, अब वो उस काम को किस तरह से यूटिलाइज करना पड़ेगा, किस तरह से उसे प्रॉपर वे में चैनलाइज करना पड़ेगा, ये इनका काम होता है, अपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट? इनका फंक्शंस क्या होता है अपर मिडिल लेवल का फंक्शंस? नंबर वन, टू रन द डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, leaving the top managers as a free as possible their responsibility. To run the details of the organizations very smoothly. उसके बाद to cooperate in making a smoothing functioning organization. To cooperate in making a smoothly functioning organization. Next है to understand the interlocking of departments in major policies. ठीक है, थर्ड है to understand the interlocking of departments in major policies. Fourth है to achieve the coordinations between different parts of organizations. Four है to understand the interlocking of the departments in major policies. Number four है to achieve the coordinations between different parts of organization. Number five है to build up a
contented and efficient staff where reward is given according to capacity and merit and not according to the chance or length of service. ओके, ये काम होता है अपर लेवल मैनेजमेंट्स का. नंबर वन है टू रन द डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट है टू कोऑपरेट इन मेकिंग स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थ्री है टू अंडरस्टैंड द इंटरलॉकिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड मेजर पॉलिसीज. नंबर फोर है टू अचीव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. नंबर फाइव है टू build up a contented and efficient staff where reward is given according to the capacity and merit, not according to the chance or length of service. So these are the important functions of middle level managements. Now supervisory or lower level management. Supervisory or lower level management क्या होता है? Supervisory management refer to those executive whose work is to control and direct the operative employees. Okay. Now supervisory management क्या होता है? Supervisory management refers to those executive whose work is to control and direct operative employees. Okay. This level include supervisor, foreman, finance, accounts, officer, sales officer, etc. These essential features of this level is that manager at this level are in direct control contact with the operative employees. ठीक है, they are more concerned with direction and control functions of the management as compared to planning and organizing. They implement the policies of top management communicated to them by the middle level managers. Okay, they are more concerned with directions and control functions of management as compared to planning and organizing. They implement the policies of top management communicated to them by the middle level managers. Now, here, managers at the lower level are known as the first line supervisor. जो managers lower level में काम करते हैं, they are known as the first level or first line of supervisor. They represent a link between the management and the workers. वो क्या करते हैं? एक लिंक तैयार करते हैं. They represent a link between managers, between the management and the workers. Now, the important function of a supervisor or lower level executive are listed below. The important functions of a supervisor or lower level executive are listed below. क्या क्या है वो? To plan and organize the activities of the group, to arrange for necessary material, machine, tools for worker, and to provide them the necessary working environment. Number third is to provide training to the workers. Number four is to supervise and guide the subordinate. Number five is to solve the to solve to supervise to solve problem of the workers. Number six is to communicate workers problems to the higher level management. Okay, ये काम होता है एक लोअर लेवल मैनेजमेंट का. इसका मतलब ये है कि यू सी दैट द efficiency of lower level management, the workload of lower level management is more as compared to the other level of managements. Okay, first of all, to plan and organize the activities of the group. Next है to arrange the necessary material, machine, tools. Third है to provide training to the workers, to supervise and guide to the subordinate, to solve problem of the worker, to communicate workers problem to the higher level management. इतना सारा responsibilities होता है एक lower level managements में. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट इज मैनेजरियल स्किल. Managerial skill is another important topic that we need to discuss. So what is the managerial skill? The job of a manager demands a mixture of many type of skills, whether he belongs to a business organizations, an educated institution, a hospital, or a club. A manager is successful when he is able to make a smooth functioning team of people working under him. Okay,
He is to reconcile, coordinate, and appraise various viewpoints and talents of people working under him towards the organization's goal. He has he has also to plan and organize the operation of the enterprise so that the subordinates are able to use the materials resources in the best possible manner. ये मैनेजरियल स्किल का ये इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है. व्हाट आर द फीचर्स? द जॉब ऑफ द मैनेजर डिमांड अ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप ऑफ स्किल्स. मैनेजर का बहुत सारा स्किल्स होना चाहिए, whether he belongs to a business organization or educational institute, hospital, or a club. Okay, a manager, a manager is successful when he is able to make a smooth functioning team of people working under him. एक स्मूथ टीम करना होता है जो अच्छा काम करता है. He is to reconcile, coordinate, and appraise various viewpoints and talents of people working under him towards the organization goals. He has also to plan and organize the operations of the enterprise so that the subordinates are able to use the material resources in the best possible manner. He has also to plan and organize the operations of the enterprise so that the subordinates are able to use the material resources in the best possible manner. For this, he must use various skills in appropriate degrees. Now, the next one is we can broadly classify the skills required by the managers into following three categories. Number one, conceptual skills. Number human skill. Number three is technical skill. Okay, so basically there are the skills are broadly divided into three categories. The skills are broadly divided into three categories. Number one is conceptual skill. Number two is human skill. एंड नंबर थ्री इज टेक्निकल स्किल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये तीनों स्किल जरूरी है जानना. Now, what is conceptual skill? Conceptual skill is the ability to see the organization as a whole, to recognize interrelationship among different functions of business and external external what you can say effort. Okay, फिर से बताता हूं. कंसेप्चुअल जो स्किल होता है कंसेप्चुअल जो स्किल होता है कंसेप्चुअल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली. ओके, कंसेप्चुअल जो स्किल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेसफुली रन करवाने के लिए. ओके, ना उसमें से क्या क्या क्राइटेरियाज है. क्राइटेरियाज ये है कि आप जितना अच्छा अपना ब्रेन, अपना स्किल, मैनेजरियल स्किल को जितना अच्छा आप यूटिलाइज कर पाओगे उतना ही अच्छा आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस का तरक्की कर पाओगे. ओके, दैट इज व्हाई इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी दिस थ्री कैटेगरीज आर वेरी मच नीडेड. टेक्निकल स्किल कैसा है, ह्यूमन स्किल कैसा है और आपका कंसेप्चुअल स्किल कैसा होना चाहिए. कंसेप्चुअल स्किल का मतलब होता है हाउ यू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. आप ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, पूरा संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को आप किस नजरिए से देखते हो, क्या क्या चेंजेस आप करना चाहते हो. नाउ कंसेप्चुअलाइजेशन और कंसेप्चुअलाइजेशन रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज. एक्सटेंसिव का मतलब होता है वेरी डीप नॉलेज, थॉट प्रोसेस, वेरी डीप थॉट प्रोसेस होना चाहिए. इमेजिनेशंस एंड एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में
जो भी मैनेजर्स बनते हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। वाई? बिकॉज उनको पता चलता है कि मेरा कंपनी जहां पर मैं काम कर रहा हूं, अगले 5 साल में ये कंपनी कितना आगे जा सकता है, जिसे कहते हैं दूरदृष्टि। हिंदी में इसका एक और वर्ड है, होता है जिसे हम दूरदृष्टि कहते हैं, विजन, मिशन। एक मैनेजर का विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए। ओके, उसको विजन में ये दिखना पड़ता है कि आफ्टर 5 years वेयर माई कंपनी विल स्टैंड। ओके, ये तो हो गया विजन। और मिशन क्या हो जाता है? मिशन, अगर वो देख रहा है कि 5 साल में मेरा कंपनी यहां पहुंचता है, तो उसके लिए क्या मिशन तैयार करना पड़ेगा, व्हाट इज विल बी आवर मिशन, कैसे हम अपना रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल स्किल। The next one is human skill. Human skill are essential to work with others and achieve their operations. Okay, human skills are the abilities needed to resolve conflict, motive, lead and communicate effectively with others. So human skills क्या है? Human skills are essential to work with others and achieve their cooperations. ह्यूमन स्किल्स जो होता है, ह्यूमन स्किल्स सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है टू वर्क विद अदर्स एंड अचीव देयर ऑपरेशंस। नाउ ह्यूमन स्किल्स आर एबिलिटीज नीडेड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मोटिव, लीड एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स। ह्यूमन स्किल का जरूरत कहां पर पड़ता है? सपोज ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी कंपनीज में आप देखिएगा, वर्कर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। समटाइम्स देयर इज अ क्वेरल बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स you find in any working place. Now, what is your responsibility? Your responsibility is to calm it down, solve the problem as quickly as possible. Okay, solve the problem as quickly, promptly as possible. Okay, this is the called human skill, human को हैंडल करना। ओके, देखिएगा, बहुत सारे टीचर्स आप अपने लाइफ में देखे होंगे, जब कोई फैकल्टी या टीचर्स क्लास में क्लास लेने के लिए आते हैं, तो स्टूडेंट्स दे यूज टू शाउट, टॉक, मेकिंग डिस्टर्बेंसेस, पासिंग कमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग इज द फैकल्टी, दो ही इज अ गुड फैकल्टी, though he is a very good faculty, he has the subject knowledge. But the problem is that he cannot have that managerial skill to control this conflict among the students. He cannot control the disturbances which created by the students. उसमें ये मैनेजरियल स्किल नहीं है। मैनेजरियल स्किल अगर होता, तो वो स्पिन ड्रॉप साइलेंट क्लास को करवा देता। तो एक अच्छा फैकल्टीज होने के साथ साथ मैनेजरियल स्किल भी होना बहुत बहुत जरूरत है। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो, कोई भी एजुकेशनल सेक्टर आप देख लो, कोई भी कंपनीज आप देख लो, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज आप देख लो, जहां ये स्किल है, वहां पर देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पंक्चुअली, बहुत मतलब विद वेरी मच डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड वर्कर्स यूज टू डू द वर्क with proper dedications and proper discipline, punctuality, the workers used to perform their duties and responsibilities. Am I clear? या फिर आप देखिएगा, in your college days, some faculties are so good with their communication, with their aura, with their performance, that whenever they used to enter the class remained active, the class became active। इनएक्टिव जब स्टूडेंट्स हो जाते हैं तब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा ऐसा कोई फैकल्टी आ जाता है जो कि बहुत एक्टिव है, तो स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं और ध्यान से उसका सब्जेक्ट्स पढ़ाने का तरीका, तौर तरीका को वो समझते हैं, सुनते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मैनेजरियल स्किल, हाउ टू कंट्रोल द क्लास। ये सबकी बस की बात नहीं होता है। इट इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एनी वन। क्लास हैंडल करना, क्लास को संभालना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल इफ यू आर डजंट हैव द मैनेजरियल स्किल इन यू। कितना चिल्लाओगे, कितना डांटोगे, कितना डांटोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इट्स यूजलेस। पढ़ाई में चुपचाप रहेंगे, they will remain silent. If you shout, set up, don't make any disturbance in the class, otherwise I will going to make you out, or I will going to make you kneel down. Okay,
वो डर से वो चुप रहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ पाएंगे, क्लास में पढ़ा पाएंगे, स्टूडेंट्स आपको अच्छा बोलेगा? नो, नेवर। फैकल्टी वही अच्छा होता है जो क्लासेस में स्टूडेंट्स को एक्टिव कर देते हैं। दे मेक द स्टूडेंट्स एक्टिव। अपना लेक्चर कंप्लीट किया, और उस लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जब फीडबैक लेते हैं तो स्टूडेंट पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, सर हमें ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, प्लीज सर कल आप आइए। और ये चीज और भी देखिएगा, जिसका मैनेजरियल स्किल सबसे ज्यादा होता है, क्लासेस का डिमांड सबसे ज्यादा उनका होता है। सर आप क्लास लीजिए ना सर, उस सर छोड़िए, कोई भी एक ही सब्जेक्ट का दो फैकल्टीज अगर होता है, दिस देयर इज अ प्रॉब्लम। some of the students, a maximum students want that particular faculty to take the class. Okay, why it happened? Because of this managerial skill. Am I clear, Madhusmita? Yes, sir. Okay. Okay, so today I have already completed the unit 1, management, process of management, nature of management, behavior of management, scientific management, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशंस क्यों जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशंस में, प्लानिंग किसे कहते हैं। ओके, अपर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, अपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सारा कुछ मैंने आज कंप्लीट कर दिया। यूनिट 1 इज कंप्लीट। Tomorrow I will going to start unit 2, that is understanding and managing individual behavior. Please Madhusmita, or models of organization behavior, organizational behavior, please remember, tomorrow I will going to start the new unit 2, models of organizational behavior. याद रहेगा? Okay, sir. Or anything, any doubt? So far I have completed unit 1. Do you have any doubt, any questions that comes to your mind? नहीं ना? Any No, sir. questions that comes to your mind? No, no ना? Okay, चलो, let's call it of a day. आज यहीं रखते हैं, tomorrow